Hello everyone, my name is Priyank Machi. Today we learn the general layout of modern thermal power plant. In this slide, you can see the line diagram of modern steam power plant. In this diagram, various components are there. And in this video, we will learn about all the components which are mentioned in the diagram with their functions. This layout comprises of four different circuits, namely first coal and ash circuit. In this circuit, coal preparation is done and that coal is used in boiler for heat generation. Second one, air and gas circuit. In this circuit, air pressure and temperature maintained for the combustion. Feed water and steam flow circuit. In this circuit, generated steam is passing through various components like turbine, condenser, pump, cooling water circuit. Final circuit is cooling water circuit. In this, temperature of steam and water is dropped down. स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर के थ्रू स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम टरबाइन पर यूज करते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. We all know that for producing the steam we require some fuel and it's come from the coal storage. Then after it come to the coal handling plant as per the requirement where it is first pulverized. पल्वराइज यानी कि वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. देन आफ्टर इट कम्स इनटू द बॉयलर. इनसाइड द बॉयलर with the help of the some air which are comes from the atmosphere pass to the air preheater where it has been heated by the heat of flue gases which pass to the chimney via preheater. So this air and coal mixture are come to the boiler and start to combust. अब इस कंबर्सन से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बॉयलर में जनरेट होगी. Now this heat is passing through the superheater where its temperature and pressure both are rise. In this superheater, steam is converted in superheated form. तो सुपरहीटर का फंक्शन ये है कि वो स्टीम को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ले जाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसे सुपरहीटेड फॉर्म में ले जाती है. देन आफ्टर इट कम्स टू द मेन वाल्व एंड देन टू द टरबाइन. एट टरबाइन steam will expand and due to expansion the steam will strike to the blade of the turbine which are mounted to the shaft of the turbine and then blades are rotated. तो जब ब्लेड रोटेट होगी तो टरबाइन की शाफ्ट को रोटेट करेगी और शाफ्ट जो है वो डायरेक्टली जनरेटर से कनेक्टेड होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. Now the steam which is used in turbine it's come out and it passes through the condenser और कंडेंसर के अंदर वो स्टीम कंडेंस होगी. कंडेंस का मतलब कि स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज हियर द ओनली लेटेंट हीट इज रिमूव फ्रॉम द स्टीम. तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंडेंसर में ओनली फेज चेंज होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता. So after the condensation, steam is converted into water. Here the condensation process is take place with the help of circulating cooling water into cooling tower. और ये जो कूलिंग वाटर है वो हमें रिवर या फिर कैनाल से मिलता है. The circulating water is come inside the condenser where it is absorb the heat from the steam
and it become hot after it's come out from the condenser. So in the cooling tower, this water is cooled down with the help of the atmospheric air also. So we can reuse the water with the use of cooling tower. तो कूलिंग टावर सर्कुलेटिंग वाटर को कंडेंस करता है, जो कंडेंसर में यूज होता है. ये कूलिंग टावर का मेन फंक्शन है. The steam which is condensed inside the condenser, it is extracted by the extraction pump and then it pass through the low pressure heater and high pressure heater. LP heater and HP heater will increase the temperature of feed water which comes from the condenser. So steam is extracted and mixed with the feed water. So hereby the mixing the steam water temperature is increased in LP and HP heater. So temperature of water is rise. हम यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है वो इसलिए बढ़ाते हैं कि हम जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब हमारे फ्यूल की जो बॉयलर में रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और उससे हमारे कोल का जो यूज है वो कम होगा. उससे हमारे पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी. So this feed water is passes through the economizer with the help of the flue gases which are already used in the boiler and superheater is passes to the economizer. तो फ्लू गैसेस की मदद से इकोनोमाइजर से फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और उसे बॉयलर में भेजा जाता है. वहां वो स्टीम में कन्वर्ट होता है. And after the combustion, the ash is generated, and this ash is comes to the ash handling plant and finally go to the ash storage. At the end, in this video, we cover all the four circuits: coal and ash circuit, air and gas circuit, feed water and steam flow circuit, and cooling water circuit, which are used in the model thermal power plant. You can take screenshot from this video of layout of modern thermal power plant for your examination. Stay tuned for the remaining syllabus.